हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लर्न करेंगे अबाउट द सल्फोनेमाइड्स। सो व्हाट आर बेसिकली सल्फोनेमाइड्स? सो सल्फोनेमाइड्स आर द first agent which are used as a antimicrobial agent. So in the history of the antimicrobial agent, we can say sulfonamides are the candidates or a synthetic compound which are first utilized against the microbes for the treatment of the infection. So there was a initially there was a scientist Domac who utilized a dye, that is prontosil red. This dye was utilized against the patient in infant on infant infected with septicemia. Okay, so at that time septicemia was the disorder which was considered as a fatal. Okay, so at that time there was no treatment. This is that we can say this is the talk around 1937. So in 1937 there was no treatment available for the septicemia and the disease was considered as a fatal. So at that time, at the hit and trial method, Domecq utilized prontosil rat on infant, and he found that the drug that dye is totally treated the patient, totally treated the infant. So there was a consensus developed at that time among the scientist community that the prontosil rat may have a chemical component. So that chemical component is basically sulfanilamide. Okay, so this sulfanilamide is basically containing every kind of the sulfonamides. So at that time scientists started to develop the derivative of this compound, and there was a consensus developed that the compound which contain sulfanilamide, they may possesses the antibacterial properties. Okay, so basically in the sulfanilamide we can say it contain, if we are looking at the chemistry of as far as concern of this compound, then what we find, it contain one benzene ring, and then this is the NS2, and this is the SO2 and NS2 group. Okay, so look at this. This is the, here we have a, we can say this is N1 and this is particularly N4. So this N1 is necessary, N1 is necessary for its potency and its efficacy and its solubility, and we can say it's a pharmacokinetic parameters. And N4 is basically needed for antibacterial property. Okay, so this N4 is required for the antibacterial property, and then the other derivatives here there is, we can change some functional group and change the pharmacokinetic properties of the compound, potency and efficacy and solubility, so that we can get the different kind of sulfonamides. Okay, so now look at the classification of the sulfonamides. So this is about, basically this is about the history of the sulfonamides. Now looking on the classification, that is important part of the chapter. Okay, so many times question has been asked from the classification of the sulfonamides. Clear? Now look at the classification. So we can divide these drug into four classes specifically. Okay, so the first one is short acting,
then intermediate acting, and then long or ultra long acting, and then some specific class, specific drugs from the sulfonamides. Okay, so in short acting we have a compound sulfadiazine. In intermediate we have a sulfamethoxazole. In long acting we have two compound, that is sulfadoxin and sulfamethopyrazine. And then specific drugs, so specific drugs can be classified on the basis of their uses. A specific drug can be classified on the basis of their uses. So we can use them in eye infection, some of the drugs. Some of the drug uses in the burn cases, burn infections. And third one is ulcerative colitis and arthritis. So in eye infection we are using sulfacetamide. In burn cases we are using two drugs, that is mifenite and silver sulfadiazine. And in ulcerative colitis case we are using sulfasalazine. Okay, so look at this, how we can learn. Short acting drugs mostly acting from 4 to 8 hours. These are acting from 8 to 12 hours. And ultra long acting, they can almost act for 7 days. Okay, so how can we learn? So here is a trick to learn the drugs, because so many times examiner in the competitive exam they are asking which of the following drug is short acting, which of the following drug is intermediate acting, and which of the following drug is long acting. So that is important point as far as concern of the competitive examinations of the medical NEET PG and pharmaceutical sciences as well as nursing examinations. So look at this, here we have a word sulfadia. Here we have a word dia means dead, मतलब जो कि मर गया है. अच्छा, मर गया है इसका मतलब जो मर गया है वो कैसा होगा, शॉर्ट होगा. जो मर गया है, जो डेड होगा वो कैसा होगा, शॉर्ट होगा. दैट्स व्हाई वी कैन identify that the compound which containing dia word comes under the short. Then further moving on the intermediate. So intermediate, here we have a M word and here we have also M word. So mediate, so we can utilize methoxazole. So intermediate and then sulfamethoxazole. And then further we have a long acting drugs. So we have a what, sulfadoxin. Long कौन रहेगा, who can survive for a longer time? The person who had taking a treatment with the doctors. So doxin मतलब doctor, dox means you can utilize this word. आप dox को use कर सकते हो doctor word से. So sulfadoxin and sulfa doctor क्या देगा, doctor क्या देगा आपको, metho and pyrazine means metho, मेथी. जैसे जो आप हम लोग मेथी की सब्जी खाते हैं उससे वर्ड याद रखो मीथो. एंड पायरा मीन्स आप पानी से इसे याद रख सकते हो, पायरा.
and then zine you can add this word. So you can learn these by these trick. इस ट्रिक्स के थ्रू आप इसको लर्न कर सकते हो कि यहाँ पर डाया जहां पर आ गया वो शॉर्ट हो गया, एम से एम यहाँ पर हम मिला देंगे तो मिथोक्साजोल हो जाएगा. देन वी हैव अ लॉन्गर एक्टिंग, तो लॉन्ग कौन किसकी लाइफ लॉन्ग होगी, सो डॉक्सिल एंड सल्फामीथोपायराजीन. ओके, देन आप फर्दर आप आई इन्फेक्शन में कैसे याद रखोगे कि जो ड्रग है वो सल्फासीटामाइड है. सो लुक एट द प्रोनाउंसिएशन, सल्फासीटामाइड. सी सी मीन्स SEE एंड सी हम किससे करते हैं, आंखों से ही हम देखते हैं. सो सल्फासीटामाइड इज द कंपाउंड फ्रॉम द आई इन्फेक्शन. देन फर्दर बर्न इन्फेक्शन. तो बर्न जब केसेस होते हैं उसके अंदर कौन से ड्रग यूज कर रहे हैं, मिफेनाइड एंड सिल्वर सल्फोनाइड. तो आप इसको याद रख सकते हैं महफिल से. देखिए जब भी महफिल सजती है तो महफिल के अंदर क्या होता है, आग भी जलती है और सोने चांदी भी बरसते हैं. तो सोना चांदी का भी इस्तेमाल होता है, तो सिल्वर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं. ओके, और महफिल के अंदर कर, तो महफिल से आप लोग यूज करेंगे मिफेनाइड, और सोने चांदी में सिल्वर से आप यूज करेंगे सिल्वर सल्फर डायाजीन. ओके, और तो इन दोनों टर्मिनोलॉजी से आप बर्न को या बर्न के इन्फेक्शन में जो ड्रग्स यूज आ रही उनको लर्न कर लेंगे. देन फर्दर अल्सरेटिव कोलाइटिस. तो आप देख सकते हैं कि अभी एक सॉन्ग आया था शैतान का साला. किसका सॉन्ग आया था, शैतान का साला. तो साला से आप याद कर सकते कि साला है जो है उसको क्या हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया. साले को क्या हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस. और उस वर्ड से आप याद रखते हो सल्फासालाजीन. ओके, एक चीज आप लोगों को याद रखनी, यहां पर जो सल्फा वर्ड है, द सल्फा वर्ड फॉर ऑल ऑफ द सल्फोनेमाइड्स इट रिमेन प्रीफिक्स. ओके, सभी जगह सल्फा आएगा. सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द सल्फोनेमाइड. सो यहां पर एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन पूछता है, यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है. नाउ मूविंग ऑन द एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम, कि यहां पर एंटीबायोटिक का क्या क्या स्पेक्ट्रम है. ओके, सो नाउ लुक एट दिस एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम. सो हियर antibiotic bacterial spectrum. So bacterial spectrum means कि सल्फोनेमाइड जो है वो कौन कौन सी बैक्टीरिया पर इफेक्टिव है. सो आज की तारीख में टिल डेट सल्फोनेमाइड्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट हीमोफिलस ड्यूक्रियाई, हीमोफिलस influenzae, Clamatobacterium, granulomatous and streptopyogenes. Okay, so these drugs are effective. These bacteria are susceptible, or these bacteria are still sulfonamide are also still killing these bacteria, but some of the bacteria like gonococci and staphylococcus aureus, nowadays the sulfonamide are really affecting on them. However, they are still sensitive. But the important thing about this, the sulfonamides are not active against anaerobic bacteria. Sulfonamide are not killing anaerobic bacteria. Okay, and this is one of the most important point about the sulfonamides. So now look at this. Sulfonamides are basically effective against gram positive and gram negative, both kind of bacteria.
they are active against gram positive and gram negative both kind of bacteria, and they are what? They are bacteriostatic. वॉट दे आर स्टेटिक. तो आप इसको कैसे लर्न कर सकते हैं? जनरली यहां पर भी नीट पीजी और जीपैट और नाइपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्फोनेमाइड्स आर, व्हाट इज द क्वेश्चन? सल्फोनेमाइड आर बैक्टीरियोस्टेटिक, बैक्टीरियोसाइडल, बोथ ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज. तो आंसर गोस बैक्टीरियोस्टेटिक. तो इसको लर्न कैसे करेंगे? सल्फोनेमाइड का जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज सल्फोनेमाइड स्टार्टिंग विद द एस, एस फॉर स्टैटिक. ओके, एस फॉर स्टैटिक. सो इससे एस को मैच कर लेंगे तो इससे आपको याद रह जाएगा. और दूसरा क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा जाता है? सल्फोनेमाइड्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट. फर्स्ट ऑप्शन इज anaerobic bacteria, second option is aerobic bacteria, third option is both of these and fourth option is none of these. So correct answer is anaerobic bacteria. So दो क्वेश्चन यहां से आपके बन गए हैं जो कि पहले पूछे जा चुके. दे आर ऑलरेडी asked in the pharmacist exam, drug inspector exam, as well as NEET, PG, AIMS, PG exam, entrance exam, as well as PGI Chandigarh exam. These question are already asked. Clear everyone? तो ये चीज आपको लर्न करनी है कि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक का स्पेक्ट्रम क्या है और किस किस पर वो किस किस बैक्टीरिया को वो किल नहीं करता है. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि सल्फोनेमाइड जो है उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है. ओके, सो देखिए सल्फोनेमाइड्स जो हैं बेसिकली दे आर एक्टिंग ऑन द एंजाइम दैट इज नॉन एज अ डाइहाइड्रोफोलेट synthetase. That is basically dihydrofolate synthetase. So now look at the mechanism of action. Mechanism of action. So basically देखिए सल्फोनेमाइड किस पर एक्ट करते हैं? वो बैक्टीरिया जो कि फॉलिक एसिड सिंथेसाइज करते हैं, मीन्स they are effective against the बैक्टीरिया विच आर सिंथेसाइजिंग फॉलिक एसिड फ्रॉम द मीडियम, क्योंकि फॉलिक एसिड को सिंथेसाइज कर रहे हैं. तो देखिए बैक्टीरिया फॉलिक एसिड को किस तरह से सिंथेसाइज करते हैं? इन द मीडियम वी हैव अ व्हाट? टेरिडीन. मीडियम के अंदर क्या टेरिडीन होगा. सेकेंड हमारे पास में क्या होगा? पाबा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड. दीज बोथ विल form dihydroteroid acid in the presence of dihydroteroid synthetase. And then dihydroteroic acid with the combination of glutamic acid convert into dihydrofolic acid. Now these dihydrofolic acid will convert into tetrahydrofolic acid in the presence of an enzyme that is what? dihydrofolate reductase. Okay, so where sulfonamide inhibit this enzyme dihydroteroid synthetase. They inhibit this one, and the one more drug that is what? Trimethoprim. Trimethoprim.
this drug block this step. Okay, so sulfonamide, if initially they block this step, then microbe is not able to form folic acid. Okay, so sulfonamide block the sequential synthesis of the dihydrofolic folic acid synthesis. Okay, now अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो ह्यूमन जो सल्फोनेमाइड्स है वो केवल बैक्टीरिया को ही किल करेगी, ह्यूमन बीइंग के लिए इफेक्टिव नहीं होगी, मींस ह्यूमन बीइंग को लेस हार्म पहुंचाएगी. सो देखिए यहाँ पर क्या है, just the important point is what human being are utilizing folic acid for the synthesis, means for DNA synthesis human being are utilize folic acid from the diet. Folic acid in human is taken from diet. That is important point. Okay, they are not taking it from the medium. However, bacteria are synthesize folic acid from medium. So that is important point. Okay, so this is the reason why the drug is not causing too much adverse event and it is killing the bacteria. So this is the reason for their selectivity. Now the another thing is that how can we say that sulfonamide act through this mechanism? What is the proof for us? So what is the proof of proof for us is what? Proof of this mechanism is what? The first point is that if we increase the amount of PABA, increase the amount of PABA, then what happened? Sulfonamide's activity is decreased. Sulfonamide activity decrease. And then second one is what? Sulfonamide activity decrease. And second one is what? The folic acid it is utilized from the human being from the their on means human being are utilizing it from the diet and bacteria are synthesizing it from the medium. Okay, now the important thing about the sulfonamide is nowadays are basically most of the bacteria are gaining what? Resistance against the sulfonamide. So what are the mechanism of the resistance? So look at this. What are the mechanism of resistance? Mechanism of resistant development. Okay, so what are the points for resistance development? So the first thing is that जो भी बैक्टीरिया ने सल्फोनेमाइड के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, उनके पास में क्या क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया. तो पहला ये है कि उन्होंने दे इंक्रीजेस बैक्टीरिया increases the amount of PABA. Okay, next point is what? अगर उन्होंने पाबा का अमाउंट ही बढ़ा लिया तो उस केस में क्या होगा? सल्फोनेमाइड वहां पर इफेक्टिव होगा ही नहीं. दूसरा क्या है? सल्फोनेमाइड्स आर बाइंडिंग विद दिस एंजाइम. ओके, सो बैक्टीरिया change the affinity towards this enzyme. What? Synthetase. Folate synthetase. And the third one is what?
microbes change the pathway for folic acid synthesis. ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो ये तीन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से कि रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है. तो यहां पर आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. क्वेश्चन इज व्हाट, which of the following statement is correct regarding the development of resistance by the microorganisms against the sulfonamides. Okay, so they give these, any of the option can be given by them. Okay, so this is the important question as far as concerned, जहां पर कि स्टूडेंट गलतियां करते हैं. Okay, so now आज एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो सल्फोनेमाइड्स हैं, they are not effective. Sulfonamides are not effective against the pus forming bacteria. Pus forming bacteria. So sulfonamides are not effective. ओके, सो क्यों सल्फोनेमाइड, क्यों पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया के अगेंस्ट में इफेक्टिव नहीं है. सो उसका रीजन क्या है. बेसिकली पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया कंटेन प्यूरिन एंड थाइमिडीन, प्लस दे ऑल्सो कंटेन पाबा. सो बोथ ऑफ दीज रिक्वायर फॉर डीएनए सिंथेसिस. So pus forming bacteria do not require folic acid for the synthesis of DNA. However, they utilize purine and thymidine for the synthesis of DNA. That's why, as well as they also contain high amount of PABA. That's why sulfonamides are not effective on the pus forming bacteria. So this is the important question for the competitive examination. यहाँ पर भी examiner question पूछ चुका है पहले कि which of the following sulfonamides is on which kind of bacteria sulfonamides are not utilized. So pus forming bacteria is the example. यहाँ पर एक exception है, mifenide is useful to kill the pus forming bacteria. So this is one exception, जो जिस एक्सेप्शन पर ही हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो देखिए आज के इन दिस वीडियो आई समराइज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द सल्फोनेमाइड्स, देन क्लासिफिकेशन ऑफ द सल्फोनेमाइड्स, एंड देन फर्दर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड स्पेक्ट्रम एंड डेवलपमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस. सो इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्क्राइब अबाउट द uses of sulfonamides and adverse events of the sulfonamides and further pharmacokinetic property of the sulfonamides. Okay, so here I am giving a one question to all of you that you have to give the answer of this question in the comment box. So my question is, golden question for today's is what, why sulfonamides are not killing the pus forming bacteria. सो अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है. क्लियर? ओके एवरीवन, ओके, थैंक यू.